Namaskar, welcome to Vision of Asia, was a community on ITV Gold, and today is what? It is that Sunday, which is the first day of 2023. So, lots of good wishes for the best 2023. May this year unfold more opportunities, more avenues of growth. May there be a lot of peace, prosperity, health, happiness, everything that you wish for. May that reach you in this new period of time. We are in the middle of consolidating our New Year resolutions, and on behalf of ITV Gold, our chairman, Padma Shri Dr. Sudhir Parikh, all members of ITV Gold family and Parikh Worldwide Media family, we extend you a very warm New Year greetings. That said, let's look at this this edition's special offerings. We'll begin with this week with Padma Shri Dr. Sudhir Parikh. Then we'll take you to a celebration of Christmas by Gujarati Catholic Samaj. We'll have Consul General Randeep Jaiswalji sharing his New Year greetings and the vision of the success story of Bharat in 2023. We have few laughters and songs specially created for you with Geeta Setia to mark the arrival of New Year. We also have a special segment where you'll be meeting an artist who has been a community friend for many years. He excels in different types of paintings, especially portraits also. Manoj Vyas, you will see a part of my conversation with him. So all this coming up right after these short messages. Stay with us. Welcome back. You're watching Vision of Asia, coming to you on ITV Gold. And now we begin this week's Vision of Asia's special edition with our weekly segment, This Week with Padma Shri Dr. Sudhir Parikh. And now, time for weekly show with a passionate India lover, chairman of ITV Gold and Parikh Worldwide Media. Get ready for loving sharing from physician, philanthropist, publisher, and India advocate in this week. Namaskar, I'm Ashok Vyas, and this is a very special final edition of this year's This Week with Padma Shri Dr. Sudhir Parikh. Dr. Sahab, namaste, welcome. Namaskar. When we talk in the last week of any year, we have this need to look back. And when you look back, how do you feel overall? How was 2022? I think 2022 was it's a mix. It was very good for everyone because we came out of the COVID. We were kind of indoor all the time, lockdown kind of thing, and everybody was kind of afraid, scared. So luckily, most of the in USA, almost 80% people got vaccinated, either two dosage or three dosage. So that's a good news. And some are even vaccinated for 4 dosage. Even I took 4 dosage. So I think if whoever has not done so, take the 4th dose because that's only dose, 4th one, only kind of guarantee you against the new variants. So I think it's a good idea to do that. And bad because stock market was bad because of our Fed kind of was little politically motivated, so they moved very slowly to tighten up the interest rate to curb the inflation. And now because of that, market went down so much. Market is down almost 25%, S&P down 25%. So I think a lot of people have, of course, it's a paper loss or real loss. A lot of people might have margin call. A lot of people might have seen their retirement become almost 3/4. So all these things are bad news in 2022.
And in that context, as we move towards 2023, the news that is coming from China, it's like New Year with another surge of COVID likely, and we are getting a lot of worrisome reports from China. On that front, COVID, how do you see potential spread in India here? I think COVID is a kind of it's a virus, right? It's like any other virus, and it's going to mutate. It's going to create the new variants as more and more people get infected. So nothing you can do about it. Only thing one can do about it is to get vaccinated, take the booster dosage, wear the mask at least when you are indoor with the large crowd, because that's the only way you're going to get the COVID, if at all you're going to get COVID. But the bright side of the whole thing is that we have treatment for COVID called tablet called Paxlovid, and that Paxlovid is really very effective, almost 95% of the people, 95% effective. So that's a good news, and it is available very freely and easily by doctor's prescription in USA. Even all the insurance company, it covers it. So I think it's a good news. And so we have to now live with the COVID and its variant, and try to, even though it's very tempting not to wear mask, but if you just wear mask, that's a simple thing you do with the vaccination. I think 99% of the chances that you will not get COVID. So beyond COVID, looking at the role that India played, and now India is president of G20 for a year, the way Prime Minister Narendra Modi accepted that responsibility, those visuals are still fresh in people's mind, and already things are moving in the direction of how India is going to organize several meetings. So talk to us about your impressions of India leading G20 under Prime Minister Modi. I think it's a great proud moment for all the all the Indians, all the NRIs who are Indian descent, because it's very rare honor to have India. This is the first time that India become the leader or kind of president, got the presidency of this very influential G20 group, which makes a lot of, which drives the economy of the world, society of the world, and the real day-to-day life of the world. So I think, I'm sure that knowing Prime Minister Modi ji, he has a vision, and I'm sure he will implement a great long-lasting vision, and gives us a great credit to all the Indian and people of the India. So talking about Prime Minister Modi's vision and his emphasis on taking pride in our cultural and historical, inspiring leaders and those who sacrifice. In that context, in the month of January in 2022, he announced that 26th December would be observed as Veer Bal Divas. That is to pay tributes to the sacrifice, the ultimate sacrifice of the sons of Guru Gobind Singh Ji, and he also addressed on 26th December. Talk to me about how this perspective of relating to our real heroes and those who gave the shape to India as it stands. I think it's a great idea because not only this Guru Gobind Singh's son's sacrifice celebration of that sacrification, but Prime Minister knows to connect any a significant event in the history to the current thing, and that's the only way one can teach the young generation, young generation to what we were in the history and what we should remember from the history. And I think it's very kind of proud thing. And we convey our kudos to our Prime Minister. Moving towards slightly political and yet
leader of Congress himself says that this is not a political yatra, that is Bharat Jodo Yatra. Once again, he reached to New Delhi, and how do you see the potential impact which Bharat Jodo Yatra by Rahul Gandhi under his leadership has? Well, I think every political party has right to try the way they think is better way of kind of galvanizing their own forces. This Bharat Jodo Yatra, I think probably it will at least created Rahul Gandhi as a serious, mature leader in India who can stand against other leaders. And so he changed, I mean, at least he achieved his own kind of change of or impression of his personality, number one. Number two, I think Bharat Jodo Yatra has some element of good things in it, because the whole concept is to, Mingle, connect. Connect to each other, connect to everybody, love each other, don't hate anyone. All those, even though you have difference of opinion, that doesn't mean that you have to hate him, or you are from the different religion or caste or creed. One should not do that. And I think it's overall it's a message which can be resonant to the people very easily. And what he has done probably in this yatra, that he connected that message with the day-to-day hardship of the poor and middle-class people. And how much it will give him a dividend, that time will tell. Of course, and there have been, of course, as you can expect, a lot of controversial remarks or certain controversies here and there. And recently, Salman Khurshid mentioned Rahul as Ram, in the sense that he said in UP he himself could not go, so like Bharat with Ramji's Chakri, so we went there, and that has caused a little bit of controversy, like people saying, how can you compare Ram, Rahul, etc. What do you say? These kind of things kind of take very well. very Again, I would not pay much attention to this kind of comment, and I would not give any credence to it, because in political, it's a political rhetoric, and in a political heat, all this thing is bound to happen from all the party concerned, not only one party or second party. So I think it was not called for. It is two other extreme. Let's put it that way. And I think it's kind of condemnable what Khurshid said about comparison about Rahul with the Ram or whatever, Bharat. So I think, but again, it's a political rhetoric, so one should not take it very seriously, or I don't think people will even remember after a couple of days. Absolutely. And you also paid tributes to Atal Bihari Vajpayee ji, probably for the first time, and there is a Sadaiv Atal Samadhi Sthal of Atalji. So very briefly, your recollection of the kind of leadership which Atal Bihari Vajpayee ji provided to the nation. Well, I was very lucky and privileged that when Atalji was Prime Minister from 1998 to or 97 to 2004. So 1999 to 2004, he continuously was Prime Minister. That time, myself and my friend Dr. Mukund Modi, who was very close friend of Atalji, we did every year the Prime Minister used to come to United Nations for its annual function in September, and we did all the 5 years, all the 5 receptions for him. I mean, with the community together to honor the Prime Minister, and we are really proud of it. And the last reception when we did was also we did with the Viswa Religious Conference, where almost 100 gurus and swamis and religious leaders came from all the faith, and there were about 5,000 people gathered together in Staten Island Beach on that conference, and it was really so we had a good connect with the
Atalji. Honorable Atalji, and he was very, very, very witty, very kind of true to his saying, and he was very kind of always inclusive. He always liked to include everybody, and that's why I think if you recall that he even went to that Ajmeri Dargah when he was Prime Minister, and I think he sent Advani to Pakistan even. So that shows that he was kind of try to be inclusive. Wonderful, and I would also now take this opportunity to compliment you for having interacted through this week with Padma Shri Dr. Sudhir Parikh week after week, and we talked about several important events. As you look towards 2023, your brief comments and greetings for our viewers. Well, dear friends, let me wish you on behalf of Parikh Worldwide Media and ITV Gold 24/7 TV channel a happy and healthy New Year. Get some good resolution on New Year, and whatever it is a personal or kind of for the community, and do good work, be more philanthropic, be more inclusive, be more kind of forthcoming to help our community here in America as well as our motherland back home. So again, wish you Happy New Year. God bless you. I love you all. God bless America. God bless India. And God bless Indian American. Goodbye. See you next year. How are we doing is related to how you are making use of your time and your potential. And festivals are also a way for us to re-energize our passion for life. 25th December was special in several ways indeed. Christmas was observed. This was also observed as birthday of former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee. 26th December in 2022, for the first time, the whole nation observed as Veer Bal Divas. But now what we have for you is a part of the celebration of Christmas by Gujarati Catholic Samaj. And this annual Christmas celebration, of course, was with Christmas carols. And interestingly, there was Christmas Garba dance night also as a part of this celebration at Holy Savior Academy Gym and Cafeteria in South Plainfield, New Jersey. Take a look.
હાલો, હું ઇમાનુએલ મેકવાન બોલું છું અને દર વર્ષે અમે આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈએ છીએ અને ગુજરાતી કેથોલિક સમાજ તરફથી આ જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે તે બદલ અમને ખૂબ આનંદ થાય છે અને દર વર્ષે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. થેન્ક યુ. બધાને મારી ક્રિસમસ અને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. જય શ્રી. Hi, my name is Ronaldson Makwan. I'm part of GCF Youth Wing. We are doing this celebration from last so many years, and everybody is coming here and enjoying. And please, we are welcoming everyone next year also. And Merry Christmas and Happy New Year. Hey, this is Niyati. I'm just wishing you everyone Merry Christmas and Happy New Year in advance. May you guys join next year. You're gonna have a great time. From Gujarat Catholic Samaj of USA. Hi, my name is Sapna Gandhi and I'm from the Gujarati Christian Federation of New York. Today we're celebrating the Jesus Christ birthday, and Jesus Christ always teaches us the love, peace and faith. So today we are celebrating that one, and I hope we can enjoy about the love, and we can understand and we can learn about the love what it is, because in this today's world we need the love and we need the peace. Thank you. Hi everyone, we are here in New Jersey celebrating Christmas with the Gujarati Catholic Federation here. Today is the birth of Jesus Christ, and we've all come together as a community, as Gujaratis, as Christians, and we're here to celebrate and have a good time today. Thank you. We are delighted to be sharing a part of my conversation with Consul General of India, Randeep Jaiswalji. The complete conversation would be presented in Inside Tonight with Ashok Show on Tuesday, January 10th. Here is Consul General with his greetings for ITV Gold viewers and vision of success in 2023. And as we are looking at 2022 reflection as well as promises and opportunities and challenges, of course. So I'm reminded of some important landmark events where we looked at the Ujjain Mahakal corridor, Mahakal Lok. I think there is a new corridor in Varanasi also. So all that brings about additional sense of self-esteem towards our cultural heritage and connecting our ancient wisdom with the modern needs of clean energy. Prime Minister Narendra Modi's initiative of International Solar Alliance and a lot of companies taking interest in the investment in solar sector in India is also something that I think will gain further high places in 2023. Talk to me about this aspect. Well, 2023 will is an important year. Presidency of G20 for India. Also, Pravasi Bharati Divas is being celebrated in Indore, in which we look forward to welcoming many of your viewers. Indore, as you know, is one of the cleanest city in India and ranked the cleanest city for sixth consecutive year now. Along with Pravasi Bharati Divas in Indore, we also have an investors meet where we'll be talking about how our diaspora can contribute to investment, can contribute to manufacturing in the state of Madhya Pradesh. As we move ahead on a clean path, on a more sustainable path, we are looking back into our history, into our heritage. Few months back, the Prime Minister, along with the Director General of WHO, and there were several other dignitaries, we started the Global Center of Traditional Medicine of WHO, World Health Organization, in Jamnagar in Gujarat. Similarly, on India's initiative, the United Nations has declared 2023 to be the International Year of Millets. Now, you, me, and several of your viewers, we all know that 20 years back or 30 years back, we all ate millets. But somehow, because of
several reasons, millets went out of our lives. But we want to bring back millets. We want to bring back some of the old cuisines from our traditional space back into our modern lives, because therein lies the solution for a healthy climate, for a healthy human being. Millets can be grown with less water. Millet are more nutritious, more nutritive. So while when you eat millet, it benefits you from health point. At the same time, it also benefits the environment because less water is consumed. If you grow 1 kg of rice, it consumes gallons and gallons of water, upwards of 1,000, 2,000, 3,000, as the case may be. Whereas a millet grows in very little water. So you're saving on water. At the same time, if you popularize millet, the farmer, the small farmer stands to gain. So there are multiple benefits. And this lead has been taken by India. A resolution was piloted by India to celebrate International Year of Millets. So you will see a lot of programs across the world on millets. The lead being taken by the United Nations, by Government of India, in India and across the world by our consulates, by our embassies and consulates. And I'm sure, with the kind of things, innovation, startup, Indian startup story is a success which is being talked of in each and every nook and corner of the world. Look at the success of UPI as a fintech platform. It is part of global conversation, global talking point today. We have so many success stories to tell. Look at the number of women pilots that we have in India today. 12.5%, highest percent in percentage terms, highest in the world. Similarly, there are several other stories. Recently, a year back or so, we had privatized the Indian space sector, which till now had been the preserve of the government only. But we opened it. We fired the first rocket produced by the Indian private sector, a startup. It successfully made it to the suborbital space. Again, a huge success, for a big shot in the arm for Indian space sector. So we have so many stories to tell. We have so many stories to share. India is a success story, and we want to continue to move on that path with the motto of Sabka Saath, Sabka Vikas. If we don't take ourselves seriously, then the world will not take us seriously. But if we take ourselves too seriously, that would add to the baggage on the journey, whereas we want you to have smooth, relaxed pathway towards success. And for that, laughter and music both work as important assets. We requested Geeta Sethia to join me for creating a special offering with laughter and music and a little bit of contemplation on our relationship with time. Here is a part of that conversation. बचपन में माँ से सीखे थे गाने, तो मुझे याद आता है कि लता जी का ये था सबसे पहले। उसकी दो पंक्तियां हो जाए। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सवा बागी वफा में, रही न रही हम। तो रहे ना रहे हम जो गीत है उसका अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे जब कोई कहता है तो बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि शुभ शुभ बोल पुत्र। तो कहते हैं क्यों नहीं रहे, हम हमेशा रहेंगे। तो ये जो हमेशा रहने वाली एक मन में एक इच्छा रहती है, वो बनी रह सकती है, यानी हमेशा हम बने रह सकते हैं। ऐसा कैसे संभव हो, आप जानती हैं उसके बारे में कुछ? जिसको हम इमॉर्टैलिटी कहते हैं या अमरत्व कहते हैं, या यूं कह दीजिए कि जो मृत्यु का डर है वो अधिकतर लोगों के मन में होता ही होता है। उससे छलांग कैसी लगाई जाए? अपना बता सकती हूँ कि उससे छलांग मैं कैसे लगाती हूँ। तो वो है कि लिव इन द प्रेजेंट। हमें भूतकाल नहीं पता, भूतकाल पता है पर हम उसके बारे में सोच के कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, और भविष्य का हमें कुछ नहीं पता।
तो माइट एज वेल लिव टुडे। तो मैं तो आज इस पल जीती। ये बहुत ही गहरी बात इन्होंने कह दी, उस गहराई में थोड़ा सा डूब के मारते हैं। तो अगर हम जो कुछ घटित हो चुका है उसमें अटके रह जाते हैं तो वो आके हमारे कंधे पर बैठ जाता है। तो इसीलिए वो जब हिंदी भाषा में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, और भूत प्रेत के बारे में भी आपने सुना होगा। तो जो प्रेत है वो अगर बीते हुए बातों का प्रेत हमारे कंधे पर आकर बैठ जाता है, हमारे माथे पर आकर बैठ जाता है, तो हम फिर वर्तमान में थोड़ा घबरा जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम भविष्य को अपने पास बिठा लेते हैं तो फिर भविष्य कभी कभी चिंता में भी हमें डाल देता है। चिंताएं ऐसी कि ऐसा नहीं होगा तो कैसा, वैसा नहीं होगा तो कैसा होगा। ये जो आशंकाओं का खेल है उससे बच सकें, उसमें कहीं कहीं हास्य भी हमें मदद करता है, क्योंकि हम कई बार चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और बाद में पता लगता है कि उतना गंभीरता से नहीं लेते तो ठीक रहता। लेकिन ये जो हास्य है ना उसके भी कई सारे रंग हैं। एक ये कहते हैं कि भाई आप किसी दूसरे पे नहीं हंसो, अपने आप पर हंसो। आपको कौन ऐसा याद आता है जिसके द्वारा आपको लगता है कि हास्य को स्वस्थ रूप से अपनाया गया और औरों तक पहुंचाया गया? मैं तो गीत के जरिए ही बता सकती हूँ। स्वागत है। छोटी थी तो मुझे बड़ा मजा आता था, अभी छोटी क्या थी, अभी भी बहुत मजा आता है गा के, सच कहूंगी। तो गाना थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको जो मुझे अच्छा लगता है। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको तेरे प्यार की कसम, जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू मेरा किसी का मीत रे, झूठी तेरे प्यार की कसम। अरे वाह, अरे वाह। जो वो अरे वाह में मजा आता है ना अशोक जी, तो वो हास्य का रूप है। ये जो गाना था इससे मुझे गुरुदत्त याद आई, वहीदा रहमान याद आई, और पुरानी पिक्चरों में एक हास्य कलाकार के रूप में जो जॉनी वॉकर साहब थे उनका भी एक अलग ही स्थान रहता था। और एक पिक्चर में उन्होंने उन पर ये फिल्माया गया था गाना, जो मुझे हल्का सा याद आ रहा है। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, 7 दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए, तो सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। बहुत बढ़िया था। फिर वो तो बोला ही तेल मालिश, तो वो जो तेल मालिश करने का स्टाइल था उनका। और उसी पिक्चर का शायद एक गाना था जिसमें वो बहुत सारी फौज होती है, 12 बच्चे होते हैं और आगे पीछे अटलम पटलम फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की, ऑल लाइन क्लियर। तो ये लाइन क्लियर रहे ना यहाँ पर, तो हम हंसी के साथ जुड़ने के लिए थोड़ा अपने आप को स्वतंत्रता दे सकते हैं। पर उसमें ये जो कुछ हमारे सोचने का ढंग होता है उस पर ध्यान रखने में, थोड़ी सी गंभीर बात में जा रहा हूँ, गंभीर है लेकिन योग जो है ना वो भी कई बार मन को संतुलित रखने में बड़े सहायक होते हैं। आप भी उस तरफ अभ्यास करती रही हैं प्राणायाम का और योगासनों, तो कैसे उससे मदद मिलती है? मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ा है जब से मैंने थोड़ा शुरू किया है योग करना। अपने को एक करना पड़ता है डिसिप्लिन उस बारे में, पर आप एक बार अगर शुरू हो जाएं तो पहले तो फिजिकली जो हम करते हैं, आसन करते हैं, दैट गिव्स यू, दैट सेंटर्स यू। थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ता है हर आसन में और एक कनेक्शन लाना पड़ता है अपने साथ, अपने को देखने के लिए कि मेरी कहाँ तक की सीमा है। मैंने शुरू जब किया तो वहाँ से किया कि कहाँ तक मैं उसको ले जा सकती हूँ अपने को, अगले दिन और कैसे मैं उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकती हूँ। तो वो करते करते एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, एक सेल्फ अलाइनमेंट आ जाती है, और उसी के साथ आप धीरे धीरे खुद ही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन की तरफ आप खुद ब खुद जाने लगते हैं, थोड़ा प्राणायाम की तरफ आप खुद जाने लगते हैं उस तरफ को, क्योंकि विद एवरी आसन ब्रीदिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विद दैट एक कनेक्शन होना ज़रूरी है ब्रीदिंग के साथ। और
देखते देखते आपको अपने में फर्क पता लगेगा थोड़ा सा, एक धैर्य थोड़ा लगता है, एक संतुलन बना रहता है थोड़ा सा। आप हवा में नहीं, हवा में उड़ रहे हैं पर बड़ी डिफरेंट तरह से, क्या बात। तो इट्स रियली नाइस। तो आई वुड एडवोकेट। हाँ, हवा हवा जो है वो हवा पे बहुत सारे गाने हैं पिक्चरों में। हवा एक तो हवा हवाई था, हवा तो आप हवाई। गाइए वो हवा हवाई। उसमें भी जो बीच बीच में कभी एक जिब्रिश कहते हैं, यानी हाँ, जो बिना अर्थ के शब्दों का प्रयोग करके भी कई गाने हैं। उस मामले में किशोर साहब जो है उन्होंने बड़े गाने उड़ लई ओ उड़ लई तो आप सुना रही थी। हम्म। ची हा, हा, हनलला, लललला, हनलला, हिंगबेगी, हांगकांग, किंगकांग, आई से रसी, रसी रसी, असी तुसी, लसी बिसी, मोम्बासा, पिंग फोंग, जिसका कोई मतलब नहीं। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फी, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहती है मुझको हवा खवाई, हवा खवाई, हवा खवाई। Artist Manoj Vyas needs no introduction in the field of those who love colors. Uh, Student of JJ School of Art, has been on the active cultural art scene in New York for many years, and I talked to him a few years ago at his home, which was also converted as his gallery. Here is part of my conversation with this unassuming artist with depth and understanding of colors of life. Artist Manoj Vyas. न्यूयॉर्क में जाना माना चेहरा है मनोज व्यास जी का। और मनोज व्यास जी की जो यात्रा रंगों की और तूलिका की कब शुरू हुई, कैसे हुई, ये जानने के लिए और ख़ास करके उनसे बात करने के लिए उनकी उस पेंटिंग के बारे में जो उन्होंने कई बरस पहले बनाई, लेकिन जब बाजीराव मस्तानी फिल्म आई तो उसकी तरफ उनका भी ध्यान गया और उन लोगों का भी ध्यान गया जिन्हें लगा कि इस कलाकार ने कई बरस पहले सजीव व्यक्त कर दिया था उस दृश्य को जहां बाजीराव उस नृत्य का आनंद ले रहे थे, जहां मस्तानी उन्हें पूरे उल्लास के साथ अपने नृत्य को प्रस्तुत करती हुई दिखाई दे रही थी। मनोज व्यास हमारे साथ रंगों की बात को लिए। मनोज जी, स्वागत है आपका। तो पहले मनोज जी आप बताएं कि आपने कहीं विधिवत सीखा है या स्वतः प्रेरणा से? जी, मैं बचपन से ही आर्ट का लवर था। जैसे मेरे बायोग्राफी में मैंने लिखा है कि जब छोटा था तब लोगों की दीवार के ऊपर कोयले से मैं ड्राइंग करता था और मार खाता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे वहाँ रंगोली करता था। कौन से शहर की बात करें? मैं बारडोली, जहाँ मैं जब बड़ा हुआ, जहाँ मैंने एसएससी की, तो वहाँ मैं रंगोली करता था। इवन फूलों के हार भी अलग अलग टाइप के करता था, कंपटीशन में फर्स्ट आता था। और वहाँ मैंने स्कूल में भी मैं जब पेंटिंग करता था तो वहाँ राज्य कक्षा, जिला कक्षा, अमीराबाद तक मेरी पेंटिंग जाती थी। फिर उसके बाद बॉम्बे आने के बाद मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में 8 साल का। तो ये जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आने के पहले आपके घर में आपके अलावा और भी कोई कलाकार रहे हैं? और घर वाले जब देखते थे कि ये मनोज अपना इतना समय पेंटिंग बनाने में लगाता है तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती थी? जी, बहुत। मेरे को मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मदर, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर। जब मैं इंडिया में बड़ी रंगोली निकालता था, इज़ मोर देन 12 बाय 12 फीट, तो कोई रिपीट करने की डिज़ाइन हो तो जो मैं बनाता हूँ तो वो लोग मुझे भी थोड़ा हेल्प करते थे। इवन कलर मिक्सिंग करके देते थे और कहते थे कि ये नहीं ये कलर यूज़ कर, ये नहीं वो कलर यूज़ कर। और जब मैं बनाता था रात को 12-12, 1-1 बजे तक दिवाली टाइम मेरे घर में लोगों की लाइन रहती थी।
क्या बात है। तो अब बात करते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। जब आपने दाखिला जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में लिया तो आपको क्या लगा, जिस तरह से वो वहाँ पे वो आपको कला के बारे में बता रहे थे और जो आपने अंत प्रेरणा से अब तक जैसे अभ्यास किया था, उन दोनों में कोई मेल था या पढ़ा? या बहुत सारा था सर जी, क्योंकि जो मैं क्या करता था, जो रेगुलरली जिसको देखता था, क्या जो कलर मुझे अच्छे लगते थे, मैं आते जाते लोगों को भी देखता था कौन से स्टाइल में जा रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से हंस रहे हैं, वो मैं मेरी पेंटिंग में और रंगोली में सब में डालता था। मगर जब जे में गया, जे इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। वो तुमको बारी बारी से हर एक मीडिया में सिखाते हैं। पेंसिल के स्केचेस दिन के 200 से 300 सबमिट करने पड़ते थे। तो उसमें मैंने छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स, इवन फ्रूट हो या थाली हो या भगोना हो, उसको भी स्केच करके मैं ड्रॉ करता था। फिर उसके बाद मैंने जी, मैं एक्चुअली आपके पीछे से जो पेंसिल स्केच है वो आपके हाथ में लेते हुए हमारे दर्शक देखें, ये आपने क्या बनाया था? जी सर जी, दिस इज एक्चुअली चारकोल पेंटिंग है, चारकोल का है, जो पोर्ट्रेट में करता था इंडिया में। और यहाँ भी मैंने किया, ये अमेरिका का है, और मेरे इंडिया के भी बहुत सारे मेरे है। कि तो जब आप पेंसिल स्केच बनाते हैं और जो कलर बना रहे, तो एज एन आर्टिस्ट आपका एक्सपीरियंस क्या डिफरेंट रहता है, किस में ज़्यादा संतोष मिलता है? संतोष तो पेंटिंग बनाने के बाद ही मिलता है, मगर स्केचेस तो क्या है, कलर पेंटिंग हम हर जगह नहीं कर सकते। तो क्या करते हम लोग कि स्केचेस कहीं भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं बैठे हो, गार्डन में बैठे हो, क्या, और पब्लिक कोई, जैसे मेरा होता हो दिवाली मेला हो ये वो, तो वहाँ बैठे बैठे हम स्केचेस बना के उसका आइडिया लेते हैं। अभी ये मेरा बाजीराव मस्तानी पेंटिंग है, जो उसके स्केचेस में स्कूल में था तभी मैं करता था। और वो मस्तानी के लिए इतना कहा जाता था कि वो पान खाती थी तो उसके गले में से लाल पानी जा रहा है, वो दिखता था। अच्छा। उतनी खूबसूरत थी। तो जो मैंने पेंटिंग में भी बताई है थोड़ी सी। और मेरे को जे स्कूल से बहुत बहुत अच्छा, तो बाजीराव मस्तानी पेंटिंग को लेते हुए जो रंग संयोजन होता है एक कलाकार के मन में, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, उसको आप कोई स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है जहाँ से देखकर आप फॉलो कर रहे होते हैं, या जो मूड है पेंटिंग का, जिस तरह की बात आप उससे कन्वे करना चाहते हैं, तो यू पिक योर कलर्स डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स? नहीं, हर बार मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ, अभी यंत्रा का पिक्चर बनाओ तो इसमें यंत्रा में हल्दी, कुमकुम, रेड, येलो, फिर मूंग का ग्रीन, जो कलर है वो को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तब उस टाइम पे भी उस आदमी को जब देखा होता है उस टाइम पे क्या कलर्स है। आई लव टू डू द पोर्ट्रेट। मैं बचपन में बहुत पोर्ट्रेट बनाए हैं, और एकदम गोरे आदमी का भी बनाया और एकदम काले से काले आदमी का भी बनाया है। अच्छा, जो पोर्ट्रेट बनाना है उसके लिए क्या खास तरह की आंख चाहिए, या किस तरह का कंट्रोल आपके पेंसिल के साथ होना चाहिए, क्योंकि कम रेखाओं के द्वारा उसका एक्सप्रेशन भी आना है, वो कैसा दिखता है वो भी बताया जाना है। जी, हर एक आदमी का चेहरा तुम देखो, किसी का गोल होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का थोड़ा सा चौड़ा होता है, किसी की आंखें डिफरेंट होती है, मूछें होती है, नाक होता है, होठ होते हैं, होठ की स्माइल डिफरेंट डिफरेंट होती है। उससे वो आदमी क्या है वो भी पता चलता है। सो व्हेन आई जब पोर्ट्रेट और ये सब करता हूँ, तब मैं ज़्यादा वो ख्याल रखता हूँ कि जो आदमी में मेन कैरेक्टर है वो मेरे पेंटिंग में दिखे। एक उड़ान होती है, जो रचनात्मक लय है, उसको लेके जब आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं तो एक तन्मयता सी सद जाती है, पर वो तन्मयता जो आपकी कलाकृति के साथ आपके अनुभव में आती है, वो उस पेंटिंग की विषय वस्तु के साथ भी संबंध रखती है क्या? जैसे जब आप
तंत्र पर आधारित पेंटिंग्स बनाते हैं, तो शायद उस तरह का चिंतन होता होगा जो आपको अलग अनुभूति देता हो। या नॉर्मली जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ ना, तो मेरे घर में मैं म्यूजिक चालू करता हूँ। ज़्यादातर क्लासिकल होता है, कभी एब्स्ट्रैक्ट या ये भी लगाता हूँ। और उस हिसाब से जब मैं करता हूँ पेंटिंग, तो मेरे पेंटिंग के अंदर स्ट्रोक भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। जो कलर्स जो मैं रखता हूँ वो भी मेरे ख्याल में भी अलग अलग आ जाते हैं। तो कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है जो इंस्पायर करता है आपको पेंटिंग करते समय? ऐसे तो ज़्यादा रिलीजियस है, जो सूफी सॉन्ग्स होते हैं वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये रिलीजियस की बात को लेते हुए मुझे याद आया, जो आपने बहुत सुंदर एक श्रीनाथ जी का स्वरूप बनाया, तो इस तरह की और भी आपकी सीरीज रही है क्या, जिसमें आपने जो हमारे भगवान के स्वरूप हैं वो बनाए हों? और विशेष करके ये जो आपने बनाया था श्रीनाथ जी का, इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसमें आपने पेंटिंग के अलावा बहुत कुछ ऊपर जो उनके श्रृंगार के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो भी उसमें चिपका कर आपने लगाई हैं। चिपका के हाँ जी सर जी, मैंने चिपका के भी बनाई है, कोई जगह पे कलर से भी मैंने ये किया हुआ है। और श्रीनाथ जी का ज़्यादा मैंने इंडिया में जब बॉम्बे में था, जब जेजे में, तब वहाँ जन्माष्टमी के दिन वो अनाज की रंगोली बनवाते थे। तो उस टाइम में मैं मटर है, सब अलग अलग धान को है, उसको थोड़ा कलर करता था। और मैं उस टाइम पे 30 साल पहले मैं रंगोली बनाता था। क्या बात है। दैट इज ऑल्सो इज 3 by 5 फीट इतनी बड़ी बड़ी। और जो जो कलर मेजर आते थे इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑल पीपल। मनोज जी, हम थोड़ा सा विषय बदलते हैं, ऐसे कि जब एक कलाकार किसी परिवेश में रहता है तो आसपास क्या हो रहा है उससे भी प्रभावित होता है, उसकी जो शैली है उस पर क्या स्थान का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप जब भारत से अमेरिका आ गए तो न्यूयॉर्क ने आपकी कलाकृति पर क्या कोई प्रभाव डाला? जी, मैं इंडिया से अमेरिका तक आया हूँ और बीच में मैं रोम गया था। और मुझे दाली के पेंटिंग बहुत अच्छे लगते थे, उसके ऊपर मैंने थीसिस भी लिखी थी जब मैं कॉलेज में था। फिर लंदन गया, हर जगह पे गया हूँ। जब मैंने सारे पेंटिंग देखे, स्कल्पचर देखे माइकल एंजेलो के और इसके, तो उसके बाद मेरे कलर में भी डिफरेंट आने लगा और मेरी स्टाइल भी धीरे धीरे चेंज होती जाए। अभी आज की पेंटिंग में आपने देखा होगा थोड़े एब्स्ट्रैक्ट भी है, कलरफुल भी है। मेरी पहले की पेंटिंग जो है बिफोर 2000 ज़्यादा रियलिस्टिक थे। 2000 के बाद 2000 से 2015 तक मैंने मेरी शैली सारी चेंज करते रहा हूँ। Time to say goodbye from today's Vision of Asia Voice of the Community, but time also to remind you to be our friends on our Facebook page, subscribe to ITV Go's YouTube channel, and keep writing events at itvgo.com. Stay safe, stay well, have a wonderful 2023. This is Ashok Vyas. Namaste.